Nope, Pratik, anyone who is interested in web development can learn this. No, it's not for just BTech students. The whole purpose of the webinar is to try to reach people and try to say to people how actually easy and wonderful this full stack actually is. And yeah, so yeah, anyone can attend. Yeah. Also, guys, okay. Also, someone let me know whether the link is working or not. Some of my friends are saying the link is not working. The link is working, right? Your friends are here, right? Yes, sir. Okay, Yeah, I nice. think link is working. Okay, Kanish, it's the the big message with the links with 24th, 25th, and we should be sharing that only, right? Sorry? The big message, the one which had the Hmm. link for 24th, the link for 25th, the link for Yeah. 26th, 24th, only 24th. at 25th. So people should be joining the 25th link now. Yeah, 25th link. Yeah. Right, right, right. So, hi everyone. What did yesterday's meeting? Yes, you all can connect on the meet chat. That's a good way. Yeah. Any doubts when I'm speaking? Any doubts? Feel free to ask in chat. We've got people, they will answer your queries within a minute or something. So no one attended yesterday's meet. Um, know some names from yesterday. Just wait a minute. Wait. Rishi. Great, great. Great, great. So I'm sharing a WhatsApp group. You can also to clear more doubts and have links to other references that we can share there. Okay. So So, Kanish, can we start? yeah, we can start. Right, right, fine. Is my video visible? Is my voice fine? Yeah, Is yeah. it lagging or something? No. Yeah, it's fine Okay, okay, fine. from my end. If you can see the screen, right?
Okay, so I will start. So, guys, first let me introduce myself. I'm Gaurau from GDSC SRM, Ramapuram. So, what I would be doing now is React. Basic as the slide says, React actually makes our life a lot easier when compared to JavaScript. So, just jumping directly into code won't solve all the queries, but instead we should know the prerequisite, the theoretical knowledge on React. So what I will be doing in the next 30 minutes is I will be sharing you guys awesome facts and information crisply, and also will be explaining the basics through the project that I built, which covered all the basic concepts. And after I do the basic explanation part, Kanish, we already know how wonderfully Kanish teaches us. We are the studies mate. So he'll be taking over from after my part. So he'll be explaining the in-depth everything, right? In-depth the components, how it's used, the coding and everything. So, okay, let me start from my side. So, guys, so what is React actually? To put in simple words, it's basically a JavaScript library for building user interfaces. Well, you might have a question now. The same thing can be also be done with HTML, CSS, JavaScript, right? So why this? Why React JS? Why should I learn React JS? The answer is React. It has wonderful functions in it, like wonderful features in it, like reusability of code and how lightweight it is, and it's mainly purely for the user interface, user interaction, and how simple and easier it, it just makes the developers' lives. I'll be explaining this clearly in the upcoming slides and everything. So, what's special about React.js? React.js is a client-side JavaScript library. It's a JavaScript library. So the prerequisites of JavaScript, I'm sure in yesterday's class, you guys might have covered the concepts of, the get element by ID, create element, append child, class list, dot add, text content, and all the basic things. Even if you understand. Gaurav, Uh, no, actually today we were short of time, so okay, I it's didn't fine. cover the It's fine. It's fine. DOM manipulation Okay, part. Yeah. okay. Okay, okay. So yeah, basically, even if you understand, I will be explaining some Java, JS too. Even if you understand, even the slightest bit of JS, you can get on with React JS. So that's the whole point that I wanted to say. Okay, fine. Excuse me. So React JS is a client-side JavaScript library. What's this used for? JavaScript is used for building modern UI, modern user interfaces with the help of DOM manipulation and everything. DOM manipulation is the term from JavaScript, and this is basically a library from JavaScript, right? So, and what is this approach? We might have studied about the top-down approach, bottom-up approach in our colleges. So, what approach React.js follows? It follows it's declarative component focused approach. It's completely based on surrounded on components, right? It's surrounded by components, so it follows component based approach. So yeah, so this is basically why React is used, right? Via this meme you can actually understand why React is used. It's like writing HTML code in a JavaScript file. Writing things in JavaScript is like writing in an assembly language. You have to declare, you have to get the event thing. In this line, each phase we have to explain in a JavaScript, but it's not the same case with React. It I'll explain in the reusability, why this concept, why is it special and all those in the upcoming thing. Okay, upcoming slides, right? So now, it's the beauty about React is you can control the specific parts of the page, not just the whole page. You can also control the whole page. You can also control the specific parts of the page, right? React is especially used for building SPA, which is single page applications. It can be also used to, yeah, as I mentioned earlier, this single page application can control this particular parts of the website or also the whole website, right? So, and overall,
By using this, it brings us a smoother user interfaces, and it also brings us better experiences, right? And what are the alternatives of React? Okay, React JS is a JavaScript library. So what are the other similar JavaScript famous libraries? React, which includes React, Angular, and Vue. So React, where and all React is used. React is generally used for small projects, like React JS, it's focused on component-based UI library, as mentioned earlier. And the little disadvantage of React is we have to import things. Let's say this concept of routing, important concept in React. We have to import modules. So it's the slightest disadvantages because because it's meant to be lightweight. So many things aren't added in React. It's for a reason. So yeah, there is a reason why people always go for React. React is the best. Okay. So nextly, like AngularJS, AngularJS is used for big projects, right? It's used for big projects. It's the same component-based learning. It has several built-in packages and everything. It uses TypeScript, where our React uses vanilla JS, vanilla JavaScript, and AngularJS it's used for big projects. And yeah, the disadvantages is like Angular might be bigger, not better UI when compared to React, and also the Vue.js. The wonderful part, I personally like Vue.js because it is a mixture of both React and Angular JS. The no the thing right it's the disadvantages of React is it's a smaller community. It is a template based syntax. It's a smaller community. We have limited resources on Vue.js. Also, currently, yeah, excuse me, guys. I'm extremely sorry. My health. So Gaurav, you mean to say Vue.js is smaller community, right? Yeah. Sorry. Yeah. Vue.js is a smaller community, and also currently, Vue.js has performance and compatibility issues and everything. So, according to the current scenario, React.js is preferred. Also, to us, we are building small projects, not any big ones. So, React.js is the go-to for us, right? So, yeah, and and I would be sharing 10 interesting facts about React.js and why should one have their interest towards them, right? So it is invented by Jordan Walk, who was a software engineer at Facebook at 2011. So maybe he thought about how disastrous JavaScript is. He had to make developers' life simpler. So he created this React.js, made our life actually very easy, and it's used for building UIs. It uses virtual DOM, the DOM manipulation. Yeah, but it uses the virtual DOM. It is lightweight, and in order to make it generally makes our UI more efficient, our code more efficient. We can write code efficiently. The concept of reusable components, the important part of React is reusable components. Re, uh, the reusable components, yeah, and React. There's something called React Native, and that is used for building mobile apps. So React is so versatile. We can split up and work on it. And React, as mentioned earlier for Vue, Kanish, you asked about Vue, right? Vue has a small community. The disadvantage is the updates or other thing won't happen quickly. But when it comes to React has a larger community. The updates, the bug fixes, and everything, it's up to date. No, that is the biggest advantage of React, right? And it is a declarative programming style. It's used for it's basically the programming method is very simple and it's more predictable. And again, this is the advantage for in the developer's side, right? And yeah, it is this React is used in huge companies like Facebook, Instagram, Airbnb, and Netflix. So these are the 10 wonderful facts about React.
And by this fact, you guys might have understood why React is so important now. And yeah, me personally, I would always prefer project-oriented approach of learning things. So what I did is I did a project for this session using React, using covering the basic concepts such as the reusing, the pros and dynamic content, event handling, event props, and everything. Using all those basic fundamentals of React, I built a simple project where the most efficient way of learning is project-based learning. That's the truth. So I built a simple to-do project for you guys to is the screen visible? Yeah, I hope the screen is visible. Yeah, it's visible. Yeah. Yeah, right. Yes, So is I'm it just showing visible? you guys the code first. Here we got the simple index.js file. Guys, just look at the number of lines. I'll be showing you guys the same project, right? In JavaScript. The one part of it, see here, like it basically like it, it has we have to declare everything in JavaScript. You see the models and everything. If there's a model, we have to say what the model does. Model dot append model text, model dot append model cancel action, model dot append model confirm action. Okay, so this is a nightmare when you're doing projects and it has to be done within certain deadlines. Well, you can see this basically has just 13 index.js, this file, the and my this src, we have components here too. This is a components based learning, right? So I've got components here too. Let's just look at app.js for now. App.js, yeah, as I said, mentioned earlier, we are importing from each files here, right? We are importing from there. We will be saying, and guys, the important part here, look at the code. Have you guys noticed the code that I wrote in this div tag especially? What does this look like? It looks like HTML, right? The concept used here is JSX, the JavaScript XML. It's like building blocks. Yeah, right. It's JSX is a method where we can write HTML like codes in a JavaScript file. That's why JSX is used. That's why you guys can see the H1 tags. Though the key, the ID, the text, and everything. No, right? So it's actually understandable to the user, to the developer, and he can configure it very easily. So in components, I have the backdrop. I have a component for backdrop. I have a component for model. Model is basically right. When I try to delete this pops up. Are you sure? This is a model. This is called a model. And yeah, so I created a separate component for all this because that is the professional way of doing things, right? So we got the model JS, we got the to-do JS, and yeah, guys, in case if you have noticed, all the files are basically for 15 to 30. Leave the CSS, okay? Leave the CSS. All the files are basically for 15 to 30 lines. Okay, this simple JS, the simple to-do app can be created just by using 65 to 85 lines of code, but that is not the similar case with JavaScript, using just vanilla JavaScript. So yeah, this is why React JS is used. So, and yeah, these are my components. I created a component especially for models, for backdrop, for to-dos, and yeah, uh, JSX syntax is used. There's slight differences and everything. And guys, I wanted to share you guys about the CSS part here too. What makes this a little pretty is the CSS here. We can just import this file to our index and everything. Here you see import index.css so that the style can be copied in this application. So we've got our index.css, index.js, app.js, to-do.js, model.js, backdrop.js. This basically sums up the entire app. So by just using within 200 lines of code, I have built this efficient to-do app. Right now, this is a simple example. You can build your own portfolios and other big projects
in a simpler way using React.js. This is why React.js is preferred because it really makes things reusability of code. It really makes things simple. And yeah, and if you guys can see here, what I did here is I used the use state. I created an ID. I've said what the text should say. ID one text learn React. ID two text learn Figma. ID three text learn Swellkit. And I've made. I don't need to write the code in the model dot function model in this line model has to do this in that line model. I don't need to write that anything. I just declare things via function normal JS function syntax. These are all normal JS function syntax, right? We just have to import files through these components, and yeah, we get the final rendered product. And this is how React projects are generally made. It's that simple. We need just to have few JavaScript files, and in that files we will be using using HTML type syntaxes, which is JSX, JavaScript XML, right? So that's how we will be building simple applications like this. So I hope I've covered the basics, the basics of what one should have and like to learn React and everything. The in-depth explanation of the reusing, the pros and the event handling, event props and everything. Kanish would be explaining them step by step, right? So and all those. So let me see. Yeah, this is yeah, right. So Kanish would take over from here, and I hope my project explained the basics of React and how the whole point of me sharing this my source code with you guys is to show you guys how simple syntax actually it is. Right? We are basically using paragraphs and button tags here, right? So the whole purpose is to show you guys by using simplest of the simplest codes, we can get the most efficient outputs. That's what React is all about. And yeah, so this is the project. I do also recommend you guys to follow project based learning through this. I refreshed few concepts of mine through this project. So if you want to learn a new language or anything, go for projects. Project based learning is always preferred than compared to the theoretical or taking notes or anything, right? So next Kanish will be giving the complete project, hands-on session where we'll be explaining. Kanish should be explaining complete hands-on session. We will be promoting project-based learning, which is hands-on learning. He'll be guiding you step by step how React is used from the React site itself. So yeah, I hope my session gave you guys a little brief just on what React is and how easy it is. So yeah, Kanish will take over from now on. Thank you. Thanks for the opportunity, Kanish. Thank you, Gaurav. Is my like camera on, like visible? Am I visible? Yeah, yeah, it is visible. Is it lagging? No, it's not. Okay. Thank you, Gaurav, for such a wonderful explanation about the React. And I don't think I would able to explain that much clearer without the code. So I'm much of a code guy. Yeah. So it was a great explanation. So did you guys understood like what is React and why we use it and why it's preferred over another frameworks? Do you have any doubt till now? Yeah, 1 second, guys, 1 second.
Sorry about that. Doesn't count. Okay. So yeah, I'll share my screen. 1 second. Okay. So Gaurav takes you to all the explanation part about the React. Okay, we'll now see what React is actually, and it's a big community, guys. If you got into React right now, it's the best place because like there's another framework called Next.js, and it's the best framework till known now. For 2023, I think Next.js will break the heights because it for the newer version of Next.js, I think they've created something like they created a server-side rendering more easily in that framework. So yeah, it's gonna be great. So yeah, first we'll learn React because it's the Next.js is all based on the React. Okay, now. So, where do I recommend you guys? So, I would recommend generally I would recommend Free Code Camp to go through with the courses, like go through the basic understanding of React, what it is, and I'll explain also. So after that, you can go to reactjs.org. Okay, so it's the best place because it's got everything from hooks and from API references and all the advanced concepts you can get in the React. Let me see, yeah, JSX and even boundaries and all that. So you get everything in here. Okay, so let's share that the meet. Uh, okay. Now, so my project is not installing, but let it install and I'll explain you the code. Okay. So inside React, I've taken a 1 second. This is how okay. Yeah. Inside React, what I did was I'll go to the code. Okay. I'll go to the code and 1 second, guys. Sorry about the interruption, guys. Really sorry. Yeah. So we were at the React docs. Okay. So React docs in getting started, you can see that there is a install in the installation part. How do we get started with React? Okay. So let's get to the code and where was yeah. So the first command that you want to run is npx create React app. So this command I'll run. Okay, I'll run in front of you guys. It takes a time. Take some time. Okay. Make another folder like that. Okay. Yeah. So I'll run this npx create React app. So it will what it will do is it will give you a structure of React. Okay, all the structure, all the minimal files that you need to run and in a project. And after the create React app, you name your app. So I'll name my app my app. You can name anything. Okay. So this will start. 1 second. This error will not come in you guys. This is mine. Yes. So after the command, it will start downloading those dependencies and those folders and the public folder, the SRC folder, all the structure files. Okay. So after this, the code will look like this in the React file. Okay. So this I've already done it. So I'll explain you the folder structure, what is React and all that. So yeah, first. So you'll see these files. Okay. So yeah, first is the first file is index.js.
what is it? If you download now the create, if do create React app, some other things might also show in your index.js that I've removed, and because I do not need it now. Okay, so what is like all these? Okay, so I've already told you in JavaScript, there is a thing called when we were doing, I think Gaurav, Heather told you about that CSS linking. Okay, so when we write HTML and CSS, we link the CSS file to the in the HTML file to the CSS file. And similarly, what we do is we import other files in this file to use it in this file. Okay, so import is doing? Import is importing that component or that function from that file and React. So it's importing React from React. It's importing React DOM because it's all based upon the DOM. Okay, so DOM, I'll tell you a little bit about DOM. What is DOM and DOM manipulation? DOM is basically document object model. What is document object model? In JavaScript, when we write HTML, CSS, JavaScript, to add them all, we use DOM. Okay, so in JavaScript, we can manipulate HTML and CSS. Okay, so that is DOM. And we also can do this with React with easy code. Okay, so as a Gaurav told you, and Gaurav showed you the code for that DOM. Okay, we can do it easily in React now. So that is DOM. So React DOM is the same. It's a DOM. It's creating a root element. Okay, everyone needs a root because there will be elements, and above there'll be elements and there'll be components. Okay, so component above components. So we need a base component, and the base component is app.js. Okay, so it's creating a root element, and you can see that in the public folder, I have an index.html file, and it's linking that to here. I'll show you. See, create root document dot get element by ID. What it's doing is it's taking from the document is that document. What we see in that image, okay, and get element by ID. What this function is doing is this function is taking the element which has the ID root. So in the index.html, we have the ID. See, here is a div and we have the ID root. So all the code, all the React code is in this div. All the React code, all we will wrote in the future, or like we wrote. So all the things, all the functions, all the components, all the elements will be inside the root. Okay. So yeah. So this is creating a root, and we have to render it. So this is rendering into the web page. This is rendering. We don't need this strict mode to render the app, and I'll make it easy to read. Yeah. Okay. So this is completion. Oh, so until installing all the npm packages, I'll explain you other things. Okay, so this is the index file. You understood? We are importing the React, we are importing the DOM, we are creating a root element which is linking to that index.html, and that root element is rendering our app. And what is app? I'll show you. So this app, okay, we are importing the app. We don't read this right now. So just leave it there. Okay. So this app, and we'll go to the app. So app.js. What is app.js? Remove this first. It's my code. Okay. So there are two things in React. If I'll take you to the PPT, I've written some things that are important. So components, I'll tell you what are components. What are components? A component is a piece of code. You can say that in like Kanish, you are muted. I was muted. Oops. So yeah. Can you hear me now? Yeah, yeah. Yeah. Okay. So which part I've covered? Like The last 10 seconds, like you started explaining about the components. okay, okay. So components. I thought I was mute the whole time. Okay, so components, yeah. So what are components? I'll tell you.
So components are basic building blocks. Yeah, you can say that it's a what piece of code or a piece of anything. So it's a piece of our web page. It can be piece of our web page. It can be piece of a button. We can say. So components, we can reuse that component inside the whole uh, inside the whole what is that inside the whole project. Okay, so the whole project can be built by components that are reusable. So when we make a button, let's say in this that's what professionals do, because in a professional site you see that if there's a button or two buttons, so the color code they match with all the buttons. So the color code is they are reusing that button. Okay, so yeah, that's all components is. The component that the reusability gives us React in the flexibility. Okay, so that's all about components. What is JSX? JSX, I'll show you what is JSX. Okay, so inside that I am the app directory. So you can see that I'm importing React from React. Okay, so I've shown you that, and I'm importing my component that I made inside the components folder. That is cart. Okay, so that's important. Don't take it serious now. I'll explain you later. I'll return. Uh, okay. What should I return? Anything I can return. 1 second. Oh, it's not taking that. It's not taking. Inside that, I'll write something. So, what can I write? I can write anything. And define. So those who were present yesterday, they know that undefined has a what value? False value. So in JavaScript, we have a concept called falsy values, and in that falsy values, I've shown you yesterday. You are muted again. Guys, जो भी म्यूट कर रहा है मत करो यार. I think somebody is muting me. Yeah. Hmm. The screen is visible. हाँ स्क्रीन विजिबल है. Someone is removing all. Okay, I'll do one thing. Okay. Come on, guys, be supportive. I know Yeah, web development community has always been a supportive community. Literally, who teaches React and all those who has the guts to take up 3 days and teach HTML, CSS, JS for a day and React for a day and 5 days for a day. When people are getting involved by themselves, I know what Kanish thought. I want to help people, so it's always been a supportive community. Please be supportive, and we have also built projects in order to explain you guys more clearly. We can just show just PPT slides and run off, but no, we have to make sure everyone understands it. So please be supportive. It's my humble request. yeah. So yeah, Gaurav, I think you're right, because as you see, like we are not getting something out of it. Okay, so it's all your profit, not my profit. I'm teaching you. I'm not getting money anything at all. Okay, so it's your profit. I'm here because like I want to teach something. That's all. I want to share knowledge. That's it. So please don't do it. So if someone was doing it, yeah. So what I was saying, the yesterday's part in the undefined as a false value. So these are the conditional operator that you can see in this slide also. Conditional rendering. It's called conditional rendering. So what I did is uh, I'll make a paragraph tag. So I'll explain from the starting. Okay, what is function? I've told you what functions are in JavaScript. Is the same. So it's a functional component. It's all a functional component. Okay.
So I wrote a function, I name it app. And in React, there's a recommendation that you should always start the name of your component with a capital letter. Okay, so I name it app. Okay, app, and after it there is parenthesis, and after that there is curly braces. In the curly braces, I am returning something. What I am returning is JSX, because in JavaScript functions you cannot return JSX. You can only return numbers and integers and strings. Okay, you cannot return a whole HTML element. So in React we have the flexibility to return JSX. Okay, so in this JSX, I've written a div. Inside the div, I've written a paragraph tag. In paragraph tag, I'll write something. Uh, I'll just do this. Yeah. Okay. So what I did is, if if this is false and this is true, show that, and this is false, show this either. So this is called a logical operator. Okay, this question mark and this logical operator. And if this value is false, it's all is saying that if this value is false, show this. If this value is true, show this. Okay, I'll explain you. One second. I'll show this. Let me start the project. I'm in React. I'm in React. अभी ये भी समझाऊंगा npm start क्यों लिखा and everything all. See, what I'm saying is anything. Show anything. So in this, I'm doing the exact same thing. One second, I'll take the. Okay, so what I'm doing is I'm taking the undefined value. Undefined value is what? False. Okay, so if I write true here, so what it will show? This undefined. Okay, undefined. That is called conditional rendering. So you can conditionally render something. So if an API is if API response अभी करके दिखाऊंगा API response से कैसे होता है. So if I'm calling an API and I want to render this while the API is being called, okay, when we have no object coming from the API, no response, show this, either show this, or when API's responses come, show this. Okay, so this is called conditional rendering. You can also do this by if conditions. If conditions की तरह same काम करता है. It's the same as if condition. Okay, so I was at JSX. Okay, so this is called JSX. The power of JavaScript and HTML combined. JSX is called JavaScript XML. Okay, XML is there's another language, XML scripting language. So it's what it is. It's called HTML plus JavaScript. Okay, so that's React is giving us the flexibility to write it. So this is my app, and I will now explain the other things. Okay, now. Okay, so the in the folder structure, this is okay, React. The source file. What is this source? This source is giving all the source. So where like all the JS files, all files you want to make will get inside the source. Okay. So this is like I've make one folder components. Okay, this I'll make this folder components. I made this folder API data. So it's all I'm making in this inside the source folder. Okay. So you want to like in the public folder, there's when we run npm build what is build, when we build the project, all the source file gets into the HTML file, this HTML file. So this will run at the end. Okay, this is public. Public is getting the index.html, and that's it. Nothing. Okay. Inside the source folder, there are some files. I explain what is like what is the work. Readme. You know all readme. Okay. Now package.json. What is this? It's all our packages inside the React. Because React is an open framework and we can use open packages, and it's called npm. Okay, npm has libraries. So other packages that we can install into our project. Okay, so we can use into our project. So what package.json is doing, it's keeping track of all those libraries or all those packages that you're getting there. Okay, so I'm getting the what I'm getting. I'm getting React scripts that has already been there. React DOM, React. Okay, so if I install another package, it will show me here. Okay,
these are all the packages, and this is a script. And what is script? Script is basically some script or some initial React code that we don't write. That it gives us like from the when we run npx create React app, when we run the create React app run kar rahe the, then we get all these scripts that helps us to run the project. Okay, so when I start npm, how to start a React project? Show you. You write npm inside. I'm inside the React directory. Okay, I mean inside the React directory. I'm using npm start to start the project. Okay, what it's doing? It's running the React scripts with a start. Okay, so npm start, and that will see this React script starts. Yes, we can see our output now. Okay, so after that, yeah, there's these are linting files, so you don't have to like know all this. Okay, so you can also what you can do is you can go to extensions and you can download ESLint for linting the project. So this package you can install into a VS Code for linting. Okay, now package location समझ गए, and then after that package log location ये क्या करता है? So this file what it's doing is it's taking all those package location that libraries, that packages that we have, and it's locking that. What is locking means? It's taking their version, because there are different versions, right? And all but when we like stuck somewhere and some package is not running, so what package.log.json will help us? It's the track of the last run that we have, track of last run um, with all those dependencies with their project versions. Okay, with all those dependencies with their project version, the last run, because with the last run we safely run that project. It's taking that and locking that. So whenever we run, whenever we stuck in the future, okay, we can take all that from package.json and we can rerun it again, because there is no conflict between the project dependencies, these dependencies versions. Okay, so there's no conflict between the versions. Now, index.js, I already explained you what is index.js is doing. It's creating the app. Okay, so now components. So app is a component. It's a function component. So there are two things in React. It's a class, and there's class component, there's function component. Before React 16.8, 16.8, why I'm saying that? Because 16.8 it is a version of React. Okay, after that functional components are introduced. Before that, class components were there. Okay, so class component has some disadvantages. We do not use that, because like we can use that. We can actually use that because Airbnb still uses class component. Okay, Airbnb is a site. Have you seen that? Somebody have a doubt? Yeah, Jay. Am I audible? Yes, Kanish. Yeah. Okay. So Ajay has a doubt. He's raising his hand. Okay, never mind. So there's class component, there's function component. So after 16.8, React introduces a function component to clean the code, because we have to extract that logic from not from every component, that some components, because some components are same. As I told you, we can reuse the component, and to reuse the logic between the components, between the different components, we use functional components, because it's easier to extract the logic from functional component as compared to the class component. Okay, so I wrote a functional component, I wrote a function, an app, and that this all its syntax I showed you yesterday. So it's creating the function, okay, and it's exporting that function to so that we can use it into another file. Okay, so export default and this app. So we can now use it in this index file. So we can import it. Import app from app. So if we remove this, it cannot be imported into index.js. It will give me error. Yeah. So see error. So it's showing that default imported as app was not found in .app.
app.js में मुझे imported default export नहीं मिला, export default नहीं मिला. It's saying that. So I exported this file and I used this in this index in this. Now we are getting the output. Okay. So now, yeah. After that, there's some other things I want to explain. Conditional rendering I already explained. What are props? Basically, props are when we want to share data, we want to share data between different components. So there's like child component, there's parent component. Okay, what is parent component? So app.js is a parent component, and what I make components in card, I made a component. It's card. Okay, so card is a child component because I use it inside app. अभी use करूँगा मैं इसमें app में. So when I use it inside an app, so it becomes child component and app becomes parent component. So I want to share some data between app and to that card. Okay, some data from app to the card or your card to the app. So we can do this via props. How we can do this? I'll show you now. So let me get this. Forget about this. Yeah. See, I have first what I did was I imported card from components.card. Okay, so that dot slash means the current directory. So in the current directory, there is components folder. Go to that components folder, and inside that there is a card. Okay, so card, I written card. And then I'm importing that card function component. And there is another. See, it's a function component. And I told you that ES6 syntax. So I'm using it's a ES6 syntax. It's a functional component, same thing. Okay. So I'm importing that, and I'm in after that. Don't say anything, just see props. Okay. What are props are doing? We can name it anything first. We can name here anything and anything you like. Okay. I'm naming it props. So props, and it's equal to that card data. Firstly, I wrote this card as a HTML component. See, as an as an HTML tag. Okay, so when we're writing h1 and also see h1, we wrote h1. Okay, so it has a closing tag, but when we write components inside components, or we can use reuse components. So how do we write it? With the non-closing tag. Okay, so it's a self-closing tag. Self-closing, inside that I write card. Okay, because card is coming from card. Okay, so that way we can use our components. So inside this app, I'm using the card component, and in that card component, what I will do is I'll do props. I'll share some props from here to there. Okay, card data, that is card data. So what is card data? I'll show you now. Now, rendering list, I'll show you later, rendering list. Okay, now, event show you later, component life cycle, this is later. Okay, now, React hooks. Okay, so let me explain React hooks, and then we'll explain later some things. Okay, so इतना समझ में आया कि हाँ कंपोनेंट होता है और कंपोनेंट्स पे कंपोनेंट्स लिखते हैं हम. एक चाइल्ड बन जाता है कंपोनेंट, एक पेरेंट कंपोनेंट बन जाता है जब भी हम कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट लिखते हैं. सो व्हाट ऐप हैज बिकम अ पेरेंट कंपोनेंट एंड व्हाट कार्ड हैज बिकम अ चाइल्ड कंपोनेंट. ओके, इतना समझ में आया? लेट मी get to the chat. Okay, nice. Does anyone have a doubt in this what I've explained? Okay, I don't think there is a doubt. Okay, moving on. React hooks. So what are hooks? भाई hooks क्या होता है? So when React introduces it first, as Gaurav told, someone I don't remember his name. In 2011, he introduced React inside the Facebook. He was a part of Facebook, so an employee.
he introduces React to make our lives easier because writing HTML inside writing JavaScript inside HTML gives us the flexibility to write various things easily. Okay, so we don't have to write another function or other something DOM manipulation the whole JavaScript file we don't to make. We will just write it here. Okay, now. So, I was telling that class when introduced. So, React hooks are the new part. Okay, 16.8. I told you React after 16.8 they introduced hooks. Okay, what are hooks? So, class based component में क्या होता था? Class पे we wrote classes and all, and उसमें life cycle होती थी. Life cycle में उसमें बहुत बड़ा code हो जाता था. So, the code was messy. It was still messy. So, to do it cleaner, they introduced hooks. Okay, we can make even our own hooks. Okay, we can make even our own, but for now we'll use React hooks. Okay, what are React hooks? The React gives us some hooks to manipulate with the state or manipulate with the anything. We can call APIs and hooks. We can call references to that HTML elements, and we can also tell we can call it a timer. There's a timer. So, okay, so we can jiggle with the things in React with the hooks. Okay, so first I'll explain use state hook. Use state. So there's a hook called use state. Okay, what is it's a function. It's a function. Okay, because I'll कल बताया था ना कि parenthesis लगाया है तो function होगा क्योंकि उसको run कर रहे हैं हम. Okay, so it's a function which takes a initial value. Let's say 0 and give it a initial value 0. Okay, so what it's doing is when we run a component and when we run this. Okay, I'll show you. I'll make something here count and I'll make let count 0. Okay, so it will show me 0. Yeah, showing 0. Okay, so when I try to increase it, okay, see that I'll make a button. My extensions are not working. I don't know why. On click of this button, increase count plus. Okay, so it's increasing the count. Oh, nahi hua. 1 second. I'll make a function out of it. Increase count, something like that. Okay, make this here. And I'm doing what am I doing? Was 0 and I'm increasing that to count. Count equals count plus 1. Let's write it that way. It's giving me error. It's same, right? 1 second, guys, bear with me. Same, right? हाथ में हूँ. Oh, okay. What am I doing? Yes, right. Totally forgot. Sorry, guys. Okay. Oops. Count equals count plus 1. Okay. So what am I doing? I'm making a ES6 function which has the name increase count. And what it's doing is on a click of this button, it's increasing our count. Still not increased. Have to use the state. Have to use the state. Huh? Yeah. Okay. So after using the state, okay. And what use state is it gives us an array. Okay. So we can destructure it. I already told you what is destructuring. Set count. It gives us two parts. Okay, this is the value, current value, and this is we can set it. Okay, set it after like anything. So I'm clicking that button and I'm setting it to
the previous count plus 1. The previous count plus 1. Okay. So what is useState is doing? It's giving us an array. Okay. An array. So it's the initial value of the count is 0. And it's showing here. And now I increase it. See, on the click of a button, I'm increasing the count. So that's the useState hook. Okay. I use the useState hook to make a counter and on a pressing of a button, and I increase it every time I press this button. Cool enough? Now we'll go to React documentation. It has something I'm forgotten one thing. Yeah, that I think useState has. Yeah, here it is. So it's doing the same thing. Okay. So on the click of a button, it's taking the count and setting the count. Okay. useState. So you can see, you can read here all that. So we are short of time. I cannot explain more than that what is useState. So you can get into depth by here reading this. Okay. I'll also not recommend the YouTube videos, because all the YouTube videos that they make are all from this. Okay. So instead of watching that, you can directly come here and read this. So it will give you an like they sometimes leave things. Okay. And they sometimes forgot things to tell you. So it's all in there. Okay. that way. So it's समझ में आया कि नहीं? यूज स्टेट समझ में आया? यूज स्टेट ने क्या किया, मेरे को एक अरे दिया इधर। अरे में क्या था, दो पार्ट्स थे, मैंने उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। एक था काउंट, एक था सेट काउंट। काउंट क्या था? जो इनिशियल वैल्यू हमने दी, 0। इनिशियल वैल्यू 0 थी ना। सी, इफ आई रिफ्रेश द पेज, इट्स गॉन। ओके, 0 हो गया दोबारा काउंटर। फिर इंक्रीज करूंगा 1 2 3, तो इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू 0 है। ओके, so initial value 0, that is count, and setting the count. What set count is? We can set the count. कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काउंट प्लस 1 सेट किया था, अभी मैं 10 सेट कर सकता हूँ। ओके, मैं जैसे इंक्रीज करूंगा 10 सेट हो जाएगा। अब मैं दोबारा इंक्रीज करूंगा तो क्या हो रहा है? 10 सेट हो रहा है, वो बार बार 10 सेट हो रहा है, तो 10 दिख रहा है मेरे को। ओके, तो या ये किया मैंने। 1 सेकेंड। हाँ, यूज स्टेट समझ में आया? It's manipulating the state of a it's just a button. It's manipulating the state of a variable count. Okay. Now, अब पढ़ेंगे use effect. What is use effect? Make this button. So use effect is used to basically now we can do anything with use effect, but for now we use it to fetch some data. Okay. So it's fetching data. What I'll tell you what it's doing. So use effect. I'll remove this first. Okay. See, use effect is a function. Okay, it takes 2 arguments. कल बताया था arguments क्या होते हैं, parameters, तो वो लेगा. So first argument is function, another function. It's a function, and the second argument is the dependency, a dependency list. Okay, it's a dependency list that is I'll tell you what is a dependency list. Okay, first thing समझ जाओ, use state के 2 arguments है, पहला function, दूसरा dependency list. अब यूज स्टेट क्या करेगा? हमारा डेटा फेच करेगा एक एपीआई से। तो एक ओपन एपीआई है, इट इज मॉक डेटा, आई थिंक इट्स अ मॉक डेटा। सो इट्स फेचिंग दैट फ्रॉम, सो फेच यूज किया हमने, रिएक्ट में फेच होता है ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी इन देयर। जावास्क्रिप्ट में भी ऑल्सो यू कैन यूज फेच। सो fetch is that, and the syntax is simple: fetch, and in the parenthesis you can write the API, and after that using the then function. So what then function is doing? It's saying that whenever the call is complete, the fetching is complete, all the fetching is complete, take that and convert it into a response and give it to the user. Okay, so it's taking that response and giving to us, returning that response.json. Okay, that's all doing use effect. And after that there's also after that see, we are using two thens here.
Why we are using two then? First then is to when response is here, return the response, and second then is for when after the response, when response comes, if there is a response, we can also do it that way. Uh, then we can make it see response आया, and if I said if there is a response, then we can do return the response. And also what we were doing before setting the data. Okay, we were setting the data. I'll take that code from here. We have that code because it's setting the data. It's making a data. Okay, setting the data to that response. Okay, the data. After that, there's no response. See, I'm using the set data. So response.json. Oh, JSON is a article. So first I'll convert it into a response JSON. JSON. Now I can do this. There is JSON. Okay. Now, so what am I doing here is I'm taking the fetch. Okay, I'm fetching some data. It's saying whenever the data is fetched, whenever in the future, because JavaScript is a asynchronous language, and we can like do other things while we are fetching something. So we are fetching this data. I am taking that data into then. Then what then is doing is whenever the data fetches, it gives us a response. So whenever when only the response has come, when only the response has come, show the response. Okay, so do the response like तुम्हें जो भी करना है response के साथ, you can do it. Okay, so जब भी response आया, जब भी उससे पहले नहीं, response से पहले कुछ नहीं, जब हो रहा है धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, आया response आया, if there is a response, I'm saying कुछ भी आया है भाई, मैं चेक कर रहा हूँ कि यार हाँ आया, कुछ आया है कि नहीं, ऐसी कुछ दे दिया इसने. Because there are sometimes हो जाता है कि लाइक हाँ रिस्पॉन्स आधा थ्रू आ गया या गलत रिस्पॉन्स आ गया. सो if there is a response, I'm saying that save that response.json because it's a JSON file. It's giving the response in JSON data. So I'm taking that into JSON data. And if there is a JSON data, I'm setting that JSON data to, oh no. I want to set that data. Oh, JSON data. What is set data? Set data is here. Use state. So use state, inside the use state, I've written an empty array. Empty array. So in the initial data, the initial state was empty array. Okay. After that initial data, I set the data because it was an empty array. I want that filled. I want that filled with data. So how can I fill with data? Set by setting the data. I set the data. Use this function to set the data to JSON data. Now the array has what? The data in it. Okay, I'll show you. What is it? Data in it. Copy this. Not card data directly. I want to show data only. Data. Oops. Inside the curly braces, I can write logic. Data.map. I will get an element. Set that. Return that element as a pre tag. As the previous time I ran, the pre tags were not working. Yeah, not working. Pre tags doesn't work. I don't know why. Therefore only. Tell me. See, the data is not here.
till the data is not here. So what we can do is we can debug this application by saying that if there is a console.log, okay, printing that response. See, I'm seeing this if response is coming at all or not. See, it's giving me an error. Giving me 8 errors. Okay, data.map is not a function. See, the data is not still filled. Okay, I'll remove this. I'll see. I want to see that data, if response is coming or not. Yeah, response is coming. So what is response? Oh, okay. So I think response.body has that array. What do we are saving in that data after that data? Same data, right? If I go to this URL now, laptop is not charged. 1 second. I think there is something wrong with the URL because it's not showing that data. Okay. Yeah, here's the data. See, all the data is in JSON. It's an array. See, array has 6 items in it. So array has 6 objects in it. 6 objects. So this is the URL that we're going to use. So we are using that URL. We're getting that data. But how to get that body? It's the main work here. Okay, I'll see now what is JSON data. Okay, so we saw that if the response is coming. Now I'll see if JSON data is coming or not. Okay, I'll refresh. I'll save that and refresh. See, there's a promise pending. Promise pending because .json is a promise. As we write then is a promise. This is also a promise. So what fetch is doing is it's giving us a promise कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो आएगा. मुझे नहीं पता क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा. तो ये तो प्रॉमिस है कि भाई कुछ ना कुछ तो आएगा. ओके, सो जब वो आ जाता है .then that's why we use .then. ओके, तभी .then यूज किया वहां पे मैंने. सो .then मुझे दोबारा ही यूज करना पड़ेगा एंड द सेम सिंटेक्स हो जाएगा यहाँ वाला. सो इजियर सिंटेक्स यही है. मुझे याद आ गया मैंने क्यों यूज किया. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ. एरर क्यों आ रहा है. हाँ आ गया नाउ. सो रिस्पॉन्स आया. रिस्पॉन्स के बाद एक और बार मैंने .then लगाया क्योंकि JSON is a asynchronous call. Okay, so after that this is also giving me response. Another promise. So for the promise we have to use .then यूज किया. उसके बाद आया मेरा डेटा और मैंने सेट कर दिया डेटा. अब मैं शो करूंगा वो डेटा. Still giving me an error. We'll see if data is set it or not. Still .then के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ डेटा आया कि नहीं. Save, refresh. सी डेटा में अभी एम्प्टी है. अभी भी नहीं फिल हुआ है वो डेटा. ओके, नाउ विल सी सेट डेटा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस, तब जब भी एक लाइन से ज्यादा कोड लिखना होता है तो कर्ली ब्रेस लगा दिया करो. इट्स अ लाइव कोडिंग. ऐसे ही मैं कोड करता हूँ और मैं डीबग कर रहा हूँ अभी कोड को बार बार उसको लॉक करके. सी मैं लॉक किया, फिर रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास. अब रिस्पॉन्स आ गया, ये डेटा आ गया. अब ये डेटा मैंने सेट कर दिया. क्या सेट कर दिया? एम्प्टी अरे में. बट इट्स नॉट सेटिंग टिल नाउ. व्हाई? दैट इज द क्वेश्चन. Oh, okay. I understood the problem. See, डेटा आ रहा था. अब ये एरर क्यों दे रहा है मुझे? अब मैं बताता हूँ. तो यही होती है कंडीशनल. एक इसको कहते हैं कौन सा ऑपरेटर था मैं भूल गया. कल मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था. वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? कोई मुझे बता सकता है? ऑप्शनल चेनिंग. देयर वाज ऑप्शनल चेनिंग. ओके, सो जावास्क्रिप्ट में मैंने सिखाया था ऑप्शनल चेनिंग. अभी अपन वो यूज करेंगे. सो वो कैसे यूज करेंगे? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं ले रहा हूँ डेटा. अब आई टेक द डेटा. ओके, एंड आई एम डायरेक्टली मैपिंग दैट.
डायरेक्टली व्हाट इज डायरेक्टली मैपिंग, डॉट मैप लगाया मैंने तो मैप हो रहा है वो डेटा। तो बट व्हाट यूज इफेक्ट इज डूइंग, व्हाट फेच आई टोल्ड यू ना कि इट विल टेक सम टाइम टू गेट दैट डेटा। ओके, so it will take some time to get that data, so this will take time. Okay, so we are not sure if the data is reached or not, and still we are setting the map and we are getting the element because it's an empty array, so it's what we are mapping in. Okay, now there's nothing in it, so that's what error is all about. How to remove that error? Okay, so there optional chaining कैसे करते थे, question mark लगा दो. Okay, so I put that question mark, still give me see, ये तो keys वाला है. Ah, there is no key in it. Okay, understood. In React, there's a मैं कार्ड से ही शो करता हूँ डायरेक्ट तुम्हें, रिटर्न कार्ड एंड का props and that element. ठीक, मेरे पास आ गया. तो ये मैंने कार्ड्स बनाए थे कुछ डेटा शो करने के लिए. सो ये 6 कार्ड्स थे. These are the 6 cards that we are getting in JSON. Okay, so I'll show you once again in console. In console, I'll write once again console dot data log data. See, there is an array. अरे आया कि नहीं आया, अरे आया. कितने एलिमेंट्स है, देयर आर 6 एलिमेंट्स. ओके, so first element is taking second element and third element, and I am what am I doing is I'm taking that I'm taking that this array. Okay, so अच्छा मेरे को ये बताओ कि if you want to make this, see that I'm showing on the screen, if you want to make this, how will you do it in HTML, CSS and JS? How can you do it? You can do it by making another HTML, like you have to write one HTML for this component, for this component, another this and that. Okay, and then then you have to write the CSS. Okay, so HTML वाला part बहुत ज़्यादा हो जाएगा. HTML will take much longer code. Okay, so instead of writing, I'm reusing a card component that I made. मैंने कार्ड बनाया, मैंने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज दे दी, वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ. कहाँ से पास कर रहा हूँ? प्रॉप से. सो मैंने क्या पास किया, डेटा पास किया मैंने, जो मेरे पास मैंने फेच किया था यहाँ पे. ओके, सो मैंने डेटा यहाँ से फेच किया और मैंने यहाँ पे पास किया, और मैं एक कार्ड बना रहा हूँ, तुम्हें अभी दिखाऊंगा कैसे कार्ड बनाया है मैंने. सो वो कार्ड बना के मैं शो कर रहा हूँ, वो कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है. ओके, दैट्स ऑल इट इज. समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या चल रहा है, यूज इफेक्ट क्या कर रहा है. It's calling the API, and what use state is doing, it's setting the state of our data. Okay, समझ में आया इतना? बहुत ज्यादा ही वो हो गया चीजें. I guess everyone understood that. Okay, so I think there are some doubts, or do some people have a question? Recently, I'm doing some work on JavaScript. I wrote a function in one file and it's trying to use that function in another file. I use export import, but it doesn't work. I looked online, tried ways. Do you what exactly could be the problem? I have to look at the problem, Sagar. So, like, you have to. I don't think in JavaScript there is import. You can import files. There's two methods of importing, right? There's import, and there's one method also that you directly what was that? Forgetting that port. I'll tell you later. Sagar will. I'll tell you later. Okay. There is another method. Search for that method. That how can I import a file in JavaScript file? Okay, another JavaScript file in one file. Okay, so it will show you that. That's const, and we wrote const लिखते हैं, फिर उसके बाद नाम लिखते हैं फाइल का. मेरे को याद नहीं आ रहा वो सिंटेक्स क्या है, तो वो सिंटेक्स है, तो वो देख लेना नेट पे, अगर नहीं मिले तो फिर बताना. ओके, एंड ऑफ कोर्स अगर तुमने वो लिखा होगा देन आई हैव टू लुक एट द एरर. देखना पड़ेगा यार कैसा होगा. नहीं यार, इंपोर्ट कर सकते हैं, ये जिसने लिखा है कि फ्रंट एंड में इंपोर्ट, यू कैन इंपोर्ट थिंग्स इन फ्रंट एंड में कर सकते हैं यार. भले एचटीएमएल सीएसएस जेएस भी है, तो जेएस की फाइल एक जेएस दूसरे जेएस में कर सकते हैं इंपोर्ट.
थिंक बाय ईदर यूजिंग, हाँ ये डिफॉल्ट और नेम्ड इंपोर्ट्स होते हैं, दो चीजें होती हैं, डिफॉल्ट इंपोर्ट्स होते हैं, नेम्ड इंपोर्ट होता है। सो नेम्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा तुम्हें उधर, ओके। एंड आई थिंक इंपोर्ट वाला मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि इंपोर्ट वाला मेथड गिव्स अस द इन रिएक्ट में देता है, एंगुलर में देता है, तो वो पैकेज हमें ला के दे रहा है आई थिंक, एंड जेएस फाइल विल नॉट वर्क इधर, सो यू हैव टू यूज अ डिफरेंट इंपोर्ट मेथड, देयर इज अनदर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही आना चाहिए कि लाइक एक दिन में तो यार इतना ही हो पाएगा। थैंक यू काव्या, थैंक यू। ओके, नो, शुड वी मूव ऑन? मैंने छह कार्ड्स दिखाए, अभी मैं उसके अंदर का कार्ड का चीज दिखाऊंगा कि कैसे कार्ड मैंने बनाया है। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। ये बहुत इजी है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने स्टेट सेट किया और मैंने यूज इफेक्ट यूज किया एक एपीआई को कॉल करने में, और उस एपीआई का रिस्पॉन्स आया, भाई रिस्पॉन्स आया। अब मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ, रिस्पॉन्स आया, फिर तू मुझे कुछ काम कर। ओके, सो रिस्पॉन्स आया, उसके बाद कुछ काम कर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आया डॉट देन, उसके बाद कुछ काम किया, उसके बाद अगर वो काम पूरा हो जाए, तेरा जेसन वाला काम पूरा हो जाए, एंड देन अनदर काम कर, ठीक है। तो अनदर काम क्या करेगा, वो डेटा आएगा, फिर मेरे पास वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन जेसन का जो मिक्सचर था, रिस्पॉन्स का बाद मैंने एक फंक्शन कॉल किया उस पर जेसॉन, वो जेसॉन बन के मेरे पास डेटा आएगा, उस डेटा को मैं सेट कर रहा हूँ। ओके, दैट्स व्हाई डॉट देन डॉट देन। दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट कॉल्ड promises. जावास्क्रिप्ट इज अ एसिंक्रोनस लैंग्वेज। एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि तुम एक फाइल रन कर रहे हो, ओके, तो एक जैसे मान के चलो एक फंक्शन पे आई बात, लाइन बाय लाइन फाइल रन होती है, फंक्शन पे आई, एंड फंक्शन इज कॉलिंग एन एपीआई, सो इट्स रिटर्निंग अ प्रॉमिस, सो दैट विल रन एट द बैक एंड, मतलब बैक में रन होता रहेगा, एंड वी कैन गो विद द फाइल। तो क्या हुआ, अभी जब एरर आया था, वो एरर क्या कर रहा था कि भाई यहाँ पे देखो कोड यहाँ आया 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 आया, सेट किया डेटा, किस पे सेट किया, एम्प्टी अरे पे, ठीक है। एम्प्टी अरे मैंने एक स्टेट बनाया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया आया, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ पे आया, डेटा आया, फेच किया उसने, अब वो फेच क्या हो रहा है, अब वो बैकग्राउंड में फेच होता है, अपने आप बैकग्राउंड में फेच होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सो दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस, दो दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, एसिंक्रोनस। ओके, तो बैकग्राउंड में फेच हो रहा है, और उसके बाद वो फेच हो रहा है, उससे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और उसने डेटा शो कर दिया। अब मैंने डेटा पे मैप कर दिया, मैप क्या होता है, फॉर लूप लगाना डेटा पे, मैंने फॉर लूप लगा दिया उस पे, और मैं एलिमेंट शो कर रहा था, अब उसमें कुछ है ही नहीं, एलिमेंट में कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग इन इट, तो एलिमेंट में कुछ था नहीं, तो मेरे को एरर आ रहा था, तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड ऑप्शनल चेनिंग। सो ऑप्शनल चेनिंग ने क्या किया कि भाई डेटा जब तू है, जब तेरे अंदर कुछ है, डेटा के अंदर कुछ है, तब मुझे मैप कर, ऐसे मत कर। ओके, डेटा कि भाई डेटा तू देख ले भाई, क्वेश्चन मार्क का तभी क्वेश्चन मार्क रखा है, आई थिंक क्वेश्चन मार्क देव चूज बिकॉज ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन भाई देख ले भाई, क्वेश्चन मार्क ये ना क्वेश्चन है भाई, मुझे क्वेश्चन है कि भाई तेरे अंदर कुछ है कि नहीं, तेरे अंदर कुछ है, अनटिल कुछ नहीं है तो मत शो कर, कुछ नहीं होगा तो नहीं शो करेगा, और कुछ होगा तो ही शो करेगा, तो दैट रिड्यूसेस आर चांसेस ऑफ एरर्स। ओके, तो तभी ऑप्शनल चेनिंग करनी चाहिए इफ यू आर नॉट श्योर कि तुम्हारा डेटा तब तक आ जाएगा जब तक तुम शो कर रहे हो उसको। ओके, तो आई, मैंने दोबारा समझा दिया ये पार्ट, समझ में आया ना? हाँ, प्रॉप समझते हैं, तो मैंने प्रॉप्स क्या किया, अब मेरे पास डेटा आ गया, डेटा में मैंने मैप किया, आई एम मैपिंग एंड आई एम टेकिंग एवरी एलिमेंट, फॉर दैट एवरी एलिमेंट, फॉर दैट एवरी ऑब्जेक्ट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द डेटा, सी हियर इज अ, if I show you that, yeah, there's an array, there's an object, so it's an object, 0 is an object, 1 is an object, so this is indexing in an array, and that in that object what we are getting, description, image, tags, and title. Okay, so these are the four things that I'm getting inside an object. So for that every particular object I am showing this screen, this, okay, this for the particular object. So 6 है तो 6 बार आया, 7 होते तो 7 बार आता। ओके, तो पहले 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 स्क्रीन के लिए मैंने क्या शो किया, HTML, दूसरे के लिए CSS, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, और मैंने बस एक मॉकअप बना दिया, अपना कार्ड बना दिया मैंने, तो मुझे 6 बार कोड नहीं रिपीट करना पड़ा, सो इट्स रिड्यूसिंग अ टाइम। सो समझ में आया कि अब क्यों रिएक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि रीयूजेबिलिटी यार, एक कंपोनेंट बना दिया, अब वो तुम कितनी बार भी यूज करो, कितनी बार, अब यहाँ पे मान के चलो 6 है, मैं 6 बार तो लिख देता, व्हाट इफ देयर 100, बिकॉज व्हेन वी आर फेचिंग अ डेटा, हो सकता है ना 100 चीजें आ जाए, हो सकता है,
इन रियल लाइफ देयर इज ऑलवेज 100 तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत होता है। सो अब इतनी सारी चीजें आ रही हैं, इतनी बार HTML लिखोगे कि बार बार, तो बार बार नहीं लिखने के चक्कर में हम रिएक्ट यूज करते हैं, ताकि मैं उस कार्ड को 6 बार मैप कर दूं, या जितनी बार भी एलिमेंट आ रहा है उतनी बार मैप कर दूं। तो कार्ड कितनी बार चल रहा है ये? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ओके, सो कार्ड कितनी बार चल रहा है? 6 बार चल रहा है। 6 बार चला, और मैंने छह के 6 बार मैंने एलिमेंट पास किया। बट मैंने 6 बार एलिमेंट तो पास किया, लेकिन वो एलिमेंट क्या था? वो एक ऑब्जेक्ट था, और जो डिफरेंट है, जो क्या है? डिफरेंट। तो हर 6 बार वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, नए नए ऑब्जेक्ट है। तो मैपिंग यही कहती है कि मैप करो। मैप मतलब फॉर लूप लगा दिया मैंने एक तरीके से इस एरे में, और एक एक करके मैंने डेटा शो किया। नो 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 नो, अब देखते हैं कार्ड में क्या है। कार्ड में चलते हैं। सी, अब मैं आ गया कार्ड के अंदर। बहुत ही सिंपल है। तो ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, क्योंकि ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पार्ट। मैं इतना ही शो करूंगा आज। तो दिस पार्ट इज सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले इंपोर्ट इंपोर्ट किया। क्या क्या इंपोर्ट किया? रिएक्ट, जो करना पड़ता है हर एक ऑब्जेक्ट, बट आज अब नहीं करना पड़ता। अब मैं इसको हटा भी दूं ना तो भी चलेगा ये। अब नहीं, पहले इसको रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता था, एंड इन दैट क्लास कंपोनेंट वी हैव टू यूज दैट रिएक्ट डॉट क्लास। तो उसके अंदर एक रिएक्ट में हमें क्लास आती थी, वो हमें यूज करना पड़ता था। लेकिन नाउ वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू use it or not. So I'm using a functional component. I'm creating a function cons card बनाया। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या लिया? props लिया। So I'm taking the props as an argument. मैंने यहाँ पे पास क्या था? प्रॉप्स पास किया था। नेम तुम कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने नेम क्या दिया? प्रॉप्स ही नाम दिया मैंने। प्रॉप्स नाम दिया, और पास क्या हुआ? प्रॉप्स पास हुआ। समझे? प्रॉप्स प्रॉप्स नाम दिया था उधर, और इधर प्रॉप्स, मैंने प्रॉप्स लिया। अब मैं यहाँ पे प्रॉप्स की जगह कुछ और लिख दूँ, मान के चलो डेटा। बट डेटा नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा डेटा? क्योंकि मैंने वहां लिखा ही नहीं है डेटा। मैंने वहां किस नाम से दिया? प्रॉप्स के नाम से। तो मैं प्रॉप्स ही दूंगा यहाँ पे। प्रॉप्स लिया, आर्ग्यूमेंट की तरह ले लिया इस फंक्शन। अब इस फंक्शन, अब ये रिटर्न कितनी बार चल रहा है? कौन बताएगा कितनी बार चल रहा है? चैट में लिख के बताओ। ये जो रिटर्न हो रहा है एलिमेंट, ये कितनी बार चल रहा है? हाँ, 6 बार। सिंपल, 6 बार यार। अभी तो बताया। क्योंकि क्या हो रहा है? इट्स लाइक दिस, आई टेल यू। ये मैंने कोड लिखा है, एक एक ये कोड था मेरा, और एक अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ। डैम इट। Oops. 6 बार लिखा। ओके, अब 6 बार ये चल रहा है। 6 बार अलग अलग लिखना पड़ रहा है ना, तो मैं अलग अलग क्यों लिखूं? क्यों लिखूं मैं? है ना? तो रिएक्ट ने क्या बोला? तू भाई अलग अलग बार मत लिख, तू एक बार लिख दे और उसको मैप कर दे। सो दैट्स व्हाट गिविंग अस फ्लेक्सिबिलिटी इन JSX, कि भाई HTML के अंदर ही मैंने JS थोड़ा जावास्क्रिप्ट लिखा, और उससे मैंने मैपिंग कर दी, और एक एक कंपोनेंट को मैंने 6 बार दिखाया। तो ये जो कंपोनेंट था, उप्स, क्या, सो ये जो कंपोनेंट था कितनी बार शो हुआ? 6 बार। तो ये कार्ड, ये तो चल रहा है 6 बार ही तो चल रहा है ये चीज। ये पूरी चीज कितनी बार चल रही है? 6 बार। ठीक है, 6 बार चल रही है। ओके, सो अब ये रिटर्न हो रहा है 6 बार। सो पहली बार इसने देखा प्रॉप्स क्या आ रहा है। पहला एलिमेंट क्या था? शो यू। सी, ये रहा। हाँ, पहले एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है? पहला एलिमेंट का इमेज क्या है? तो इमेज एक HTML इमेज है, और टाइटल क्या है? HTML। तो इमेज और टाइटल की बात करेंगे हम। तो पहला एलिमेंट आया, उसका इमेज आया, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। कुछ नहीं, इमेज एलिमेंट, यू ऑल नो, क्लास नेम। इन HTML वी राइट क्लास, एंड इन रिएक्ट वी राइट क्लास नेम। ओके, कुछ फर्क नहीं है, सिंपल वो सेम है। द वर्किंग इज सेम। आई एम टेकिंग द क्लास एंड गिविंग इट द क्लास नेम। जैसे ये एनीथिंग, जैसे कार्ड। तो कार्ड एक क्लास है। ओके, दैट आई एम गिविंग। सो अभी स्टाइल समझाऊंगा। स्टाइल्स क्या है? तो एक मॉड्यूल बनता है। स्टाइल्स डॉट कार्ड कुछ नहीं कर रहा है, वो इस मॉड्यूल से मुझे कार्ड का स्टाइल दे दे रहा है। बस ये कार्ड डॉट कार्ड लिख रखा है, इसका स्टाइल है कुछ, और ये मुझे यहाँ पे पास कर, दे देता है। ओके, स्टाइल्स डॉट कार्ड
that styles are applied to this div. Okay. And inside this div, I've written an image element. In that image element, I've written a class name. That is same, the class name for that image, particular image. And SRC. What is SRC? SRC is source. कल बताया था गौरव ने कि भाई SRC क्या होता है, सोर्स होता है. तो उसमें हम क्या लिखते हैं, इमेज कहाँ से आ रही है हमारी, where is this image coming from. Okay, so I can write either any link I can write or any refer to that link. So I'm referring to that link. कैसे रेफर कर रहा हूँ, अभी तो प्रॉप्स आ रहा है जो मेरा, तो पहला एलिमेंट आया, पहले एलिमेंट का इमेज क्या था, दिस, ये. तो ये इमेज यहाँ पे शो हो रहा है. ओके, एंड फिर H1 एलिमेंट में क्या कर रहा हूँ मैं, टाइटल शो कर रहा हूँ, टाइटल. तो टाइटल HTML है. तो पहले वाले का क्या हो गया, 1 सेकेंड. हाँ, HTML. पहला वाला क्या हो गया, HTML. दूसरा वाला क्या है भाई, दूसरा वाला दिखा मुझे, टाइटल क्या है, CSS. दूसरा वाला CSS शो हो गया. सो ऐसे ही ये चीज 6 बार रन कर रही है, 1 2 3 4 5 6. Okay, and in those 6 times, every another time there is props and they are coming different. Because why they are coming different, why अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि they are objects inside that data that are different. Okay, yeah, that was it. तो ये कार्ड शो होते हैं हमें 6 without writing that HTML 6 times. समझ में आया. हाँ, for those queries I have given you a WhatsApp group. उस ग्रुप में मैं हूँ, उसमें ग्रुप में मुझे टैग करो, और या गौरव को टैग करो या हृदय को टैग करो, anyone tag anyone and leave that query. मैं वहाँ पे सॉल्व करता हूँ. तो ग्रुप का लिंक ऊपर होगा चैट में, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप. और लाइक थोड़ी बहुत क्वेरीज यहाँ पे लिख सकते हो, अभी क्वेरीज अभी है तो. If there are no queries, you can say yes, understood, or not understood, no. Because it's fine यार, क्योंकि एक बार में तो इतना समझ में नहीं आता है. और ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबका सब रिएक्ट उसमें दिया हुआ है. हाँ प्रीतम बताओ. You can write in the chat or you can speak up. ओके, तो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब का सब कहाँ पे अवेलेबल है, उस रिएक्ट डॉक्स में जो मैंने शेयर किया. ओके, so everything is available in that React docs. I have written all basic things in that PPT that I will share. Also, I will share the GitHub link that has this code. Okay, I'll share you now that GitHub link. In this GitHub link, I will push that code. Is somewhat calling function in a function using different objects for usability, right? What is somewhat calling written? Somewhat calling function in a function using different objects for reusability. You can say that. Not function in a function, I would say. That's a wrong approach. For reusability, it's ये समझो कि हिंदी में समझाता हूँ. तुम्हारे पास एक क्लास है, ठीक है. हर क्लास होती है, क्लास कॉलेज की क्लास, ठीक है. कॉलेज की क्लास है, एक सेक्शन है उसके अंदर, ठीक है. तो एक क्लास बना दी गई. अब उसके अंदर कितने सेक्शन बैठ सकते हैं, कोई भी सेक्शन बैठ सकता है, क्योंकि बच्चे डिफरेंट है, क्लास तो सेम है ना, क्लासेस सेम, और कोई भी आके बैठ सकता है वहां पे. तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. हमने एक मॉकअप बना दिया, एक कार्ड बना दिया. अब उसके अंदर जो डेटा है वो डिफरेंट है, हर बार रेंडर हो रहा है, हर बार वो रेंडर हो रहा है, तो वो डिफरेंट है. बस सिर्फ वो चीज डिफरेंट है, बाकी कार्ड तो सेम है, कार्ड इज सेम. तो जो डिफरेंट डेटा है वो डिफरेंट बार बार आता है. 6 बार आया इस बार, इस केस में 6 बार आया, एंड देन 6 बार वो डिफरेंट चीज शो किया हमें. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 6 बार, 6 बार वो आया, लाइक डिफरेंट कार्ड शो हो रहा है. तो कार्ड वॉज सेम,
द HTML वो सेम, HTML सेम था ना, वो तीन तीन चीजें हैं बस, वही 6 बार रिपीट हो रही है। एनी डाउट? ओके, एनी अदर डाउट्स? Because I think it's over. I'll explain also the, if I have time, 20 minutes more, so I'll explain the more about React. Okay, so that was the code part. I'll give you the code. Okay, see, so this is all completed. These topics are all completed. Events क्या होते हैं? Events मैंने अभी दिखाया था ना तुमको, बटन पे क्लिक किया था मैंने, ऑन क्लिक बनाया था। यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया था, याद है? अभी तो बनाया था, बटन बनाया और इस पे ऑन क्लिक लगाया था। उप्स, ये मुझे आज मेरा कोड एडिटर साथ नहीं दे रहा है मेरा। हाँ, ऑन क्लिक लगाया, ऑन क्लिक लगाया और इस पे मैंने एक इवेंट डाला। भाई ये ऑन क्लिक क्या है? इवेंट है। तो क्लिक पे, क्लिक इज एन इवेंट, हवर इज एन इवेंट। सो डॉम मैनिपुलेशन में हम चीजें करते हैं। अरे भाई, जब भी किसी कार्ड पे मैं हवर करूं तो मुझे उसको ऊपर उठा के दिखाना है, तो मुझे CSS चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डिफरेंट इवेंट लगाना, हवर लगाना पड़ेगा उस कार्ड पे। तो ऐसे ही जैसे हवर होता है वैसे ही क्लिक होता है, एक क्लिक भी एक इवेंट है। दीज आर इवेंट्स। Okay, I think most part is completed. Component life cycle now. We'll move on to component. The hooks I already explained है ना, multiple custom React hooks in the same component. देखा मैंने अभी क्या यूज किया? Multiple React hooks पे use effect था, use क्या use state था। तो use state मैं अभी कार्ड के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। ओके, तो वो कार्ड जो मैंने बनाया है, ये कार्ड है, इसके अंदर भी सेम हुक्स यूज कर सकता हूँ इफ आई वांट। इफ अगर मेरे को करना है, तो अभी मुझे नहीं करना है तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो हुक्स है तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके, यूज स्टेट और यूज फैक्ट से क्लीन है। जब तुम रिएक्ट थोड़ा पढ़ लोगे, थोड़ा हो जाओगे, तो सब तब समझ में आएगा। तो अपने कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं हम। कस्टम हुक्स क्या होता है कि हम अपना हुक बना सकते हैं। तो वो हुक क्या करेगा? कुछ भी करेगा, एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग वी वांट कि वी कैन गेट दैट हुक। तो वो हुक, एक बार हुक रेडी हो गया और उसको पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। Okay, so that's what the flexibility and power comes for with React. Now, what is component life cycle? तो ये diagram सबसे easy explanation देता है for the component life cycle. Okay, so क्या होता है कि ऐसे समझो, रिएक्ट कंपोनेंट से बना है। मैंने जैसे बताया, हर एक चीज एक कंपोनेंट है। तो हर एक स्मॉल चीज एक कंपोनेंट हो सकती है, और वो नहीं है तो वो एक कंपोनेंट के अंदर है। ओके, तो कंपोनेंट से बनती है चीजें। सबसे पहले होता है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज क्या होता है? वो कंपोनेंट है, मतलब वहां पे है, सो ये समझ लो वहां पे कंपोनेंट है, तो मतलब मैंने इनिशियलाइज किया, उस कंपोनेंट को लिखा। कंपोनेंट को लिखा, जैसे मैंने फंक्शन बनाया तो वहां पे वो इनिशियलाइज हो गई चीज। जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, उसका वैल्यू नहीं दे रहे, फंक्शन बना दिया बस, और कंपोनेंट क्या कर रहा है? वी आर नॉट टेलिंग दैट। तो दैट इज इनिशियलाइजिंग। सो ये फिर आता है माउंटिंग। माउंटिंग क्या होता है कि स्क्रीन पे शो करने से पहले तुम मुझे वो करो। माउंट का मतलब होता है स्क्रीन पे शो करना। ओके, माउंट का मतलब क्या हो गया? स्क्रीन, ये समझ लो, एक अभी मान के चलो माउंट का मतलब स्क्रीन। तो माउंटिंग हो गई स्क्रीन पे शो करना, जो मैंने रिएक्ट का कोड लिखा है। अब उससे पहले अगर मुझे कुछ काम करना है, उससे पहले अगर कुछ काम करना है, तो मैंने क्या यूज किया अभी? यूज इफेक्ट। मैंने क्या यूज किया था? यूज इफेक्ट यूज किया। जैसे यूज इफेक्ट यूज किया, तो ये क्या कर रहा है? यूज इफेक्ट ये डेटा फेच कर रहा है, और मैंने डिपेंडेंसी तो कोई डाली नहीं। अगर ये डिपेंडेंसी नल है, अगर डिपेंडेंसी नल है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट रेंडर पे डेटा वो कर रहा है। ऑन द फर्स्ट रेंडर, पहले रेंडर पे डेटा फेच करो। आया समझ? मतलब अब पहले रेंडर पे डेटा फेच करने का मतलब है कि स्क्रीन आई नहीं है, अभी स्क्रीन शो नहीं हुई है, एंड डेटा फेच होने लगा। ओके, सो डेटा इज फेचिंग व्हेन स्क्रीन इज इवन नॉट देयर। ओके, सो डेटा फेच करो स्क्रीन से पहले। सो फर्स्ट रेंडर पे स्क्रीन, तो रेंडरिंग हो गई, स्क्रीन शो करना। रेंडर का होता है स्क्रीन शो करना। अब स्क्रीन शो करने से पहले ये डेटा फेच कर लो, तो ये होता है यूज इफेक्ट का मतलब। तो ये मैंने किया है। यूज इफेक्ट का मतलब ये डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं यूज इफेक्ट। सो जितने तुम यहाँ पे क्लास के मेथड, ये क्लास के मेथड्स हैं। ओके, कंपोनेंट विल माउंट, रेंडर, कंपोनेंट विल अपडेट माउंट, एंड दिस प्रॉप्स के मेथड है, स्टेट के मेथड है, और ये अनमाउंट हो गया। तो ये सारे क्लास के मेथड्स। तो इतना इतना ये सिचुएशन बहुत ज्यादा मेसी था, तो इतना मेस को हटाने के लिए
हमने सिर्फ यूज इफेक्ट बना दिया और मोस्ट ऑफ द वर्क यूज इफेक्ट से हो जाता है, मोस्ट ऑफ दिस लाइक वर्क। ओके, तो माउंटिंग हो जाती है और मैनिपुलेटिंग भी हो जाता है, फिर अनमाउंटिंग भी हो जाती है, तो कुछ भी कर सकते हैं यूज इफेक्ट से। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने माउंटिंग किया है। तो माउंटिंग कैसे किया है मैंने, मैंने यहाँ पे एम्प्टी अरे डाला है। एम्प्टी अरे का मतलब है भाई किसी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अभी कोई डिपेंड नहीं है उसका, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब कुछ डिपेंडेंसी का मतलब है कि अगर वो चीज चेंज होगी तो ये फंक्शन चलेगा। अगर जैसे मान के चलो मैं डेटा डाला, ठीक है, मैंने यहाँ डेटा डाला। अब ये यूज इफेक्ट क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई जब भी डेटा चेंज होगा, एक डेटा इज चेंज्ड, मान के चलो इस अभी तो चेंज कर नहीं सकते हम डेटा। हाँ, अभी चेंज कर नहीं सकते हम डेटा। शोइंग इन्फिनिट लूप, वो इन्फिनिट लूप में चला गया, चीज इन्फिनिट लूप में चली गई। हाँ, इट्स रेंडरिंग दैट डेटा। ओके, सो अभी क्या हुआ, मैंने डेटा डाला, जैसे ही मैंने डेटा डाला तो वो इन्फिनिट लूप में चली गई, बार बार डेटा शो हो रहा था, बार 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 हो रहा था। क्यों बार बार हो रहा था, क्योंकि डेटा एक बार रिस्पॉन्स से आया, फिर रेंडर किया, फिर वो रेंडर हुआ, अब रेंडर होने के बाद दोबारा डेटा शो हो रहा है, तो तभी हो गई यहाँ पे डिपेंडेंसी। तो डेटा पे डिपेंडेंट था वो, ठीक है, डेटा पे डिपेंड हो गई वो चीज कि डेटा जब भी आएगा उसको शो करो। तो वो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो पहली बार आया फिर उसको शो करो, फिर दूसरी बार आया फिर उसको शो करो, तीसरी बार उसको शो करो, तो ये ऐसे हो रहा था। तो या सो दैट्स व्हाट इट्स डूइंग डेटा। तो यहाँ से मैंने डेटा लिया था। अब यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी डाल सकता हूँ जब भी मुझे डेटा फेच करना है, ठीक है। तो मान के चलो मुझे बटन के क्लिक पे नहीं, बटन के क्लिक पे तो मैं फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे काउंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, यू कैन रेफर दैट इन द रिएक्ट डॉक्स, आई शो यू। काउंट का बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मैंने पढ़ा था। शुरू से जाना पड़ेगा, स्टार्टेड। नो, नहीं था। आई थिंक यही वाला एग्जांपल है। या यू कैन वन थिंग, रिएक्ट बुक्स, मैंने देखा था W3 स्कूल्स पे, यूज इफेक्ट। हाँ, तो ये एक एग्जांपल है, ये मैं तुम्हें रेफर कर देता हूँ। ये मैंने रेफर किया। ओके, सो या हाँ, तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, एज यू कैन सी, यूज स्टेट लिया है और यूज इफेक्ट लिया है। ओके, सो यहाँ पे टाइमर सेट कर रहे हैं हम, एक फंक्शन बनाया हमने, एक टाइमर। और ये फंक्शन के अंदर देखो, इसने एक एक चीज यहाँ पे गलत की है कि फंक्शन के अंदर यूज स्टेट लिखा है, लिख सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड यू राइटिंग अ फंक्शन यूज स्टेट इनसाइड अ फंक्शन। फंक्शन टाइमर के अंदर लिख, ओके ओके ओके, इट्स अ कंपोनेंट, सॉरी। तो ये फंक्शन यहाँ पे फंक्शन सिर्फ नहीं है, इट्स अ कंपोनेंट। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, मैंने बाद में देखा ये चीज कि रूट डॉट रेंडर टाइमर रेंडर हो रहा है, तो ये कंपोनेंट है एक। टाइमर इज अ कंपोनेंट, इनसाइड द कंपोनेंट यू कैन यूज यूज इफेक्ट। ओके, यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, सेट टाइम आउट, मैंने कल बताया था सेट टाइम आउट, आई थिंक रह गया था। सेट टाइम आउट भी कुछ नहीं करता है। देखो ये क्या करेगा, एक मिली सेकेंड्स में वैल्यू लेगा, तो ये वैल्यू किसमें, मिली सेकेंड्स में, किसमें, मिली सेकेंड्स। तो 1000 मिली सेकेंड्स मीन 1 सेकेंड, एक सेकेंड बाद इसको चलाएगा, सेट काउंट को, हर एक सेकेंड बाद, हर एक सेकेंड बाद इस जो भी इनसाइड इसके अंदर लिखा होगा सेट टाइम आउट के, उसको चलाएगा, ठीक है। तो अब इस यूज इफेक्ट में देखो, इसने डिपेंडेंसी नहीं दी है, तो ये हर रेंडर पे चलेगा, हर रेंडर पे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, बार बार चलता जाएगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी, यूज सेट टाइम आउट टू काउंट 1 सेकेंड आफ्टर इनिशियल रेंडर। तो क्या बोल रही है कि इनिशियल रेंडर के बाद 1 किया और फिर उसके बाद दोबारा रेंडर हुआ, फिर 2 3 4 चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, एज मेनी टाइम। ओके, या तो हाँ, यू कैन, हाँ, रेफर दैट। तो ये वाला एग्जांपल रेफर कर सकते हो तुम, यहाँ से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट और यूज स्टेट दोनों को चीज़ों को यूज किया है, और उस काउंट का कितनी बार चल रहा है वो,
इतनी बार रेंडर हुआ ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट बताएगा। पता है यहाँ पे क्या बताएगा? अब देखो जितनी बार चीज चल रही है, अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया तुम्हें क्या था, हम्म, तो ये कितनी बार चल रहा था? ये 6 बार चल रहा था। 6 बार चल रहा था ना, क्योंकि एलिमेंट कितनी बार आया? 6 बार आया। वो सॉरी, ऑब्जेक्ट कितनी बार, हाँ वही एलिमेंट कितनी बार आया? 6 बार आया। तो ये बता रहा है कि ये कंपोनेंट कितनी बार चल रहा है इसके वे में, है ना। अब मैं यहाँ से बता सकता हूँ देख के, क्योंकि मेरे पास 6 ही कार्ड्स हैं, तो कंपोनेंट कितनी बार चल रहा है ये वाला? 6 बार चल रहा है। ओके, सो रेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट में। रेंडर का मतलब कोई चीज रिएक्ट वो हो रही है, क्या कहते हैं, स्क्रीन पे शो हो रही है, ओके, रेंडर हो रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वी गेट गॉट इनटू प्लेसेस लाइक कि वो बहुत बार रेंडर होता है। तो अभी जैसे मैं एक अभी मैंने उसमें डेटा लिखा था, यहाँ पे मैंने डेटा लिखा था, तो इन्फिनिट लूप में चला गया, तो वो रेंडर होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था। तो इससे हमें बचना है, ठीक है। इन्फिनिट लूप भी नहीं। अब कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे वो इनपुट बनाया, इनपुट एलिमेंट। तो इनपुट एलिमेंट जब तुम बनाते हो, तुम पढ़ोगे आगे रिएक्ट, तो इनपुट एलिमेंट बनाते हो तो उस कंपोनेंट करना पड़ता है यूज मेमो। यूज मेमो एक तरीका होता है जिससे हम कंपोनेंट का रेंडरिंग टाइम निकाल सकते हैं, रेंडर कितनी बार रेंडर हो रहा है तो उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है रिएक्ट के, रेंडरिंग कम करना। क्योंकि तो यू डोंट वांट ना कि वन टाइम द पेज इज रेंडर्ड एंड यू डोंट वांट कि है ना दोबारा रेंडर हो, दोबारा रेंडर हो, दोबारा रेंडर हो, है ना। क्यों भाई, वो क्यों करें? तो रेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको उसको समझने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये हुक्स यूज करते हैं, ओके। जैसे यूज इफेक्ट हो गया, तो इससे हम जान सकते हैं कि कितनी बार रेंडर हो रहा है, ऐसे। समझे? ठीक है, चलो, बस आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आज एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि देन इट विल बी बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, एक बार में तो इतना ही कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके तुम पूरा पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। और मैं रेफर कर दूंगा एक और चीज, एक चीज यूट्यूब का कोर्स रेफर कर दूंगा, उधर जाके अच्छे से समझ सकते हो। एक सेकंड यार। हम्म, तो ये तो 12 घंटे का कोर्स है, इतना मत देखो, देख सकते हो तो, देखना तो पड़ेगा, मैंने वही वाला देखा था, तो उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। थिंक ये सही है, 5 घंटे का कोर्स है, तो उसमें वो इंट्रोडक्शन से लेके पूरा वो बताएगा कंपोनेंट्स। तो अच्छा तुम एक काम करो, रिएक्ट हुक्स हुक्स पढ़ सकते हो डायरेक्ट, रिएक्ट हुक्स। हाँ, स्टेट मैनेजमेंट, कॉन्टेक्स्ट नेट इंजर सही है, आई थिंक नेट इंजर इज फाइन। Hey, gang, and welcome. Okay, so want to start off with this. We want to start off with something a bit. यार जो चीज़ मैंने देखी नहीं ना, तो मैं रेकमेंड नहीं करता। मैंने ये सारे फ्री कोड कैंप के देखे हुए हैं, तो ये तुम अभी स्टेट मैनेजमेंट समझ लो, तो ये अच्छे से समझा देगा, यू उसमें आ जाएंगी चीज़ें, बहुत सारे हुक्स आ जाएंगे। ये देख लेना एक बार यार, और तुम्हारे उसमें तो सब कुछ है ना, इसमें तुम्हारे ये क्या कहते हैं, डॉक्स में, सो रिएक्ट डॉक्स में एवरीथिंग इज देयर, ओके। नाउ आई थिंक या दैट्स ऑल आई कैन टीच यू इन रिएक्ट। कंपोनेंट लाइफ, हाँ लाइफ साइकिल समझा रहा था, तो माउंटिंग हो गई। माउंटिंग का मतलब माउंटिंग के बीच में आता है रेंडर। तो माउंटिंग, देखो मैंने बोला था माउंटिंग मान लो रेंडरिंग है, देखो होता नहीं है रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब शो करना पेज पे। माउंटिंग के बीच में, माउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है, उसके बीच में आ रहा है रेंडर, ओके। सो देख रहे हो ना, रेंडर आ रहा है यहाँ पे। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले चलेगा कंपोनेंट विल माउंट, तो पूछेगा, तो ये बनाए गए ऐसे हैं, क्लास के जो मेथड्स हैं ये बनाए ही ऐसे हैं, इनका नाम ही ऐसा रखा गया है कि अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। तो कंपोनेंट विल माउंट, वो पूछ रहे हैं होगा कि माउंट नहीं, हाँ तो वो जो होगा या नहीं होगा जो भी, तो उसके अंदर हम चीज करते हैं। फिर रेंडर आता है, तो रेंडर हो गया, होगा कि नहीं होगा, हो गया, और फिर उसके बाद हुआ कि नहीं हुआ, समझे। तो अभी जो यूज इफेक्ट हम देख रहे हैं ना, वो पता है क्या हो रहा है, वो कंपोनेंट डिड माउंट है। जिस तरीके से मैं अभी यूज इफेक्ट को चला रहा हूँ, वो कंपोनेंट डिड माउंट है। क्या है? कंपोनेंट डिड माउंट।
ओके, तो दैट इज माउंटिंग एंड अपडेशन क्या होता है? अब मान के चलो मैं वो बटन के क्लिक करने से मैं उसको अपडेट कर रहा था, स्टेट को कर रहा था, तो वो हो गया अपडेशन। बट अब उस अपडेट को मुझे मेंटेन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक, वो अब दूसरी चीजें आ गई हैं, तो फिर वो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें तुम्हें स्टेट जो यूज स्टेट है उसका तुम्हें वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे डेटा लिया था, तो जैसे मैंने बटन के क्लिक पे क्लिक काउंट बढ़ाया था, तो काउंट को उसको तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो तरीके से कर सकते हो, तो इस चीज से कर सकते हो तो ये बहुत बड़ा मेथड है, इसको मत पढ़ो, पूरे को नहीं पढ़ना है अभी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं सॉरी, इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, अभी मतलब नहीं है, लेकिन अभी बस समझो कि हाँ अपडेशन प्रोसेस होता है, कंपोनेंट लाइफ साइकिल का प्रोसेस होता है। तो एक कंपोनेंट बनाया काउंट का ही, सिर्फ काउंट का बनाया, वो सिर्फ अपडेट हो रहा है, ठीक है, अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, जितनी बार क्लिक कर रहे हैं बटन पे, है ना। तो वो देखो ये क्या होगा, ये हैं सारे इन डेप्थ मेथड्स, ये चीजें अंदर से क्या होती है, जैसे मान के चलो मैं हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अब ये भाई पॉइंटर्स का मतलब तो बताते नहीं है, सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स बताते हैं, है ना, सी में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो क्या होता है, ये चीजें जैसे सी बहुत ही थोड़ी लो लेवल लैंग्वेज है, तो वो ज्यादा डेटा से, जो हमारे डेटाबेस सॉरी कंप्यूटर है उससे ज्यादा कनेक्टेड है, ओके। सो जो हमारे हार्ड ड्राइव और जो रैम है उससे ज्यादा कनेक्टेड है, तो उसको लो लेवल, थोड़ा बहुत लो लेवल बोलते हैं। लो लेवल तो फिर तुम आगे नीचे चले जाओ, 14 हो जाती है। तो वैसे ही तो अब मुझे जावास्क्रिप्ट में थोड़ी पता है कि उसके बैक में क्या चल रहा है, मैंने एक अरे बनाया, अब उसमें उस जावास्क्रिप्ट में तो बता नहीं रहे बैक में क्या चल रहा है, कि भाई अरे कहाँ स्टोर हो रहा है, स्टैक में स्टोर हो रहा है कि हीप मेमोरी में स्टोर हो रहा है, दो चीजें होती हैं, तो नहीं पता। तो वैसे ही अभी मैं यूज इफेक्ट कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट का, बट उसका पता होना चाहिए, लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यूज इफेक्ट के साथ क्या करना चाह रहे हो। मेरे को एपीआई कॉल करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने बस फर्स्ट रेंडर पे, ऑन द फर्स्ट रेंडर मैंने यूज इफेक्ट चलाया, तो जैसे ही रेंडर हुआ ना, तो मेरा कंपोनेंट इनबाउंड वो यूज इफेक्ट चल गया, ओके। तो ये हो रहा है अभी रेंडर के बाद यूज इफेक्ट, तो फर्स्ट रेंडर मतलब पहला रेंडर हुआ, यूज इफेक्ट चला दो, पहला रेंडर हुआ, मेरे को फेच कर दो डेटा, ओके। तो डेटा फेच हो जाएगा, फिर हमें शो हो जाएगा, अब वो फास्ट इतना होता है कि तुम्हें पता नहीं चलता, ओके। हाँ, फिर ये प्रॉप्स और स्टेट्स के थोड़े बहुत मेथड्स हैं, तो ये अंदर की चीजें हैं, जैसे शुड कंपोनेंट अपडेट हो गया, तो वो बोलेगा कि भाई अपडेट करूं कि नहीं करूं, अगर ट्रू है, वो ट्रू है तो भाई विल कंपोनेंट अपडेट होगा, फिर रेंडर होगा, और फिर उसके बाद कंपोनेंट अपडेट होगा, तो ये चीज हो गई। अगर फॉल्स है तो वो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ओके। ऐसी चीजें हैं, स्टेट्स में भी ऐसी चीजें। और अनमाउंटिंग क्या होगी, अनमाउंटिंग मतलब जो कंपोनेंट जैसे दोबारा रेंडर हो रहा है उससे पहले, ये समझो। अनमाउंटिंग मतलब तो मैंने तो ये ऐसे समझा है कि दोबारा रेंडर हो रहा है उससे पहले का स्टेट वो होता है अनमाउंटिंग, कंपोनेंट विल अनमाउंट। अच्छा, जैसे मान के चलो अनमाउंटिंग का मतलब ये समझो कि मैं एक पेज पे जा रहा हूँ और मैं एक कंपोनेंट रेंडर हो, जैसे मान के चलो रिएक्ट पे गया मैं, ठीक है। अब ये डॉक्स क्या है, एक कंपोनेंट है, एक राउट बोल सकते हो तुम, बट एक कंपोनेंट की तरह लेते हैं इसको। अब क्या हुआ, अनमाउंटिंग सिखाता हूँ। अनमाउंटिंग कब हुई, जब मैं ट्यूटोरियल पे गया, तो डॉक्सी क्या हुई, अनमाउंटिंग हो गई, अनमाउंट हो गया वो कंपोनेंट। ट्यूटोरियल क्या हो गया, माउंट हो गया ये कंपोनेंट, समझे। तो माउंट होगा, अब मैं इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ, अभी तो चेंज नहीं कर सकता, तो वो अपडेट हो जाता अगर कुछ चेंज कर सकता तो, है ना। तो ऐसे, तो ये चीज हो गई। अब ट्यूटोरियल क्या हुआ, अनमाउंट हो गया, डॉक क्या हो गया, माउंट हो गया, तो जो शो हो रहा है वो जो माउंट हो गया, बट ऐसे कह नहीं सकते कि शो हो रहा है, लेकिन अभी जो चीज हो रही है वो इससे सही हो रही है, माउंट और अनमाउंट, दैट्स इट, दैट्स द होल कंपोनेंट लाइफ साइकिल। तो एक कंपोनेंट की लाइफ साइकिल है, ये माउंट हुआ, और उसके बाद मैं अगर कुछ चेंज कर सकता तो अपडेट हो जाता वो, और अपडेट के बाद क्या होता है, हाँ अपडेट के बाद अनमाउंटिंग, सीधा बस अपडेट हुआ और फिर उसके बाद अनमाउंटिंग। अब मैं ट्यूटोरियल जब मैं खोलूंगा, जैसे ही डॉक अनमाउंट हो रहा है तो उस पर कुछ रन करना है अगर तुम्हें, तो तुम फंक्शन यूज करोगे कंपोनेंट विल अनमाउंट, ओके। और ये फंक्शन सिर्फ क्लास बेस के लिए है, फंक्शन बेस के लिए, वो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए नहीं है, क्लास कंपोनेंट्स के लिए। या थिंक टाइम हो गया, और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ गई। ओके, सो या डिफरेंस बिटवीन माउंटिंग एंड रेंडरिंग बताया। माउंटिंग मैंने बोला, अरे मैंने कहने के लिए बोल दिया था कि रेंडरिंग मान लो उस समय के लिए, लेकिन माउंटिंग रेंडरिंग नहीं होता है, माउंट का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके बीच में रेंडर आता है, ओके। माउंटिंग रेंडरिंग इज अ पार्ट ऑफ माउंटिंग, ओके। नाउ एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट्स यू हैव गाइस? थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं यार, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा पानी पी लो यार मैं।
बहुत ज्यादा हो गया। माइक खोलो यार, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Got it? Gaurav, are you there? Yeah, I'm there. Okay, okay. तो इतना ही था आज के सेशन में। ये पीपीटी मैं शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट स्क्रीन सेकेंड। See, I've sent you the link for the PPT. PPT से रेफर कर लो, उसमें सारे टॉपिक्स लिखे, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को जाके सर्च करो। ओके, खुद जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज हमने एक वो जो बनाया मैंने, जो मैंने कार्ड शो करे, वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ओके, तो अगर जावास्क्रिप्ट से करते तो बहुत हैसल हो जाता। सो टू नॉट क्रिएट अ हैसल, वी हैव रिएक्ट। दैट्स इट। Sir, different between Node.js and React, which was preferable? See, both are totally different things. React is a framework for the front end. Okay, Node.js is for back end. Okay, React.js is for front end, Node.js for back end. You can use both in a project. Node.js में क्या होता है, अभी क्या हुआ ना कि ये कौन बंदा था वो 2005 में, हाँ 2005 में एक बंदा आया, उसने Node.js बनाया और वो जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे ले गया बंदा, तभी बना Node.js। तभी, क्योंकि Node.js पे भी हम जावास्क्रिप्ट ही लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं बैकएंड पे। तो बैकएंड पे जो चीज़ चल रही है, और ये हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड कर रहे थे अभी। फ्रंट एंड में क्या था, रिएक्ट था। तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हो गए जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, दीज आर द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स एंड यू कैन यूज देम विद बैक एंड फ्रेमवर्क लाइक Node.js, Django। तो ये बैक एंड फ्रेमवर्क्स हैं। फायरबेस हो गया, फायरबेस विल लर्न। ओके Okay, sir. Thank you. यार सर मत बोलो, यू कैन कॉल मी कनिश, डायरेक्टली कनिश बोलो। हाँ, भैया बोल सकते हो तो सही है। चलो, और कोई डाउट? हाउ मेनी पीपल आर देयर? लेस देन टुमारो। चला जाता है इंटरेस्ट, कोई नहीं, बीच में इतनी सारी चीजें थी। यस, आई एम अ स्टूडेंट यार, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इन थर्ड ईयर करंटली। आई एम लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। आई शुड लाइक, आई आल्सो प्रमोट दैट, लाइक कि तुम्हें करना चाहिए एनकरेज। मैं तो करता हूँ बहुत लोगों को यार कि पढ़ाओ यार, पढ़ाने से बहुत कुछ आता है। एनी अदर क्वेश्चंस? भैया इमेजेस को कैसे लाइक कोड पर इंपोर्ट करना है? सॉरी, स्पीक अप अ लिटिल बिट। रोशनी, यू वर सेइंग इमेजेस को क्या, सुन नहीं पाया, थोड़ा और तेज बोल सकते हैं? तो ये इमेजेस को कैसे एक्सपोर्ट करना चाहिए लाइक पीएस कोड पर? VS कोड पे इमेज एक्सपोर्ट करनी है। सो रिएक्ट में क्या होता है ना, मैंने पब्लिक डायरेक्टरी बताई थी। पब्लिक डायरेक्टरी में जाओगे, उसमें फोल्डर बना लो इमेजेस। ओके, तो तुम्हें एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो स्टैटिक बन जाएगा वहाँ पे। तो रिएक्ट का जब तुम फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तुम अगर डॉक्स में जाओ और उसमें ऐसे लिखना रिएक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, सो इमेज इंपोर्ट करके दिखाई देता हूँ यार मैं, एक सेकंड। देखो यहाँ तो तुम पब्लिक में जाके अच्छा मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड। अच्छा, देखो यहाँ पे मेरे पास जैसे इमेज है favicon.io। ओके, आई सी यू। यहाँ पे या तो डायरेक्ट यहाँ पे इमेजेस फोल्डर बना लो, यहाँ पे मैंने इमेजेस बना लिया, बट ये स्टैटिक नहीं रहेगी, और ये रेकमेंड किया जाता है कि स्टैटिक यूज करें हम। ठीक है, तो जैसे इमेज को इंपोर्ट करना बहुत आसान है।
इमेजेस में गए और उसके अंदर मैंने favicon.i ये डाल दिया। ओके, अगर मान के चलो मुझे इस कंपोनेंट में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं नाम दे दूंगा इसको favicon from // current directory images / favicon, and then you can use that favicon inside this an image tag. Oops. ठीक, इमेज आ गई। बस हाँ। इंपोर्ट कैसे इंपोर्ट किया मैंने इसको, इमेज को, कुछ भी नहीं था। मैंने यहाँ पे इमेजेस बनाया, उसके अंदर कहीं पे तुम्हारी इमेज है उसको उसको राउट करो जहाँ पे तुम्हारी इमेज है, वहाँ पे जाओ। अब वो ये तो तुम्हें आना चाहिए, लाइक डॉट / का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, और डॉट / का मतलब होता है प्रीवियस डायरेक्टरी। तो अगर तुम्हें, मैं SRC में हूँ और मुझे रिएक्ट पे पहुंचना है, तो क्योंकि SRC के ऊपर रिएक्ट है और मुझे पब्लिक में जाना है, तो पब्लिक में जाने के लिए पहले मैं रिएक्ट पे जाऊंगा, तो ऐसे रिएक्ट पे जाऊंगा और फिर उसके बाद उसके बाद रिएक्ट लिखूंगा, जो भी रिएक्ट मेरा फोल्डर है। उसके बाद मैं पब्लिक लिखूंगा, फिर ऐसे ऐसे करके जाऊंगा। ठीक है, जाओ उस पे और वहां से इंपोर्ट कर लो एंड यू कैन यूज दैट इन SRC। सिंपल। ओके भैया। तो एक कोड मैं उसमें गिटहब पे पुश कर दूंगा और ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें और डाउट्स है, तुम्हें आगे अगर फ्यूचर रेफरेंसेस चाहिए। और हाँ, वन थिंग गौरव, यू कैन ऑल्सो शेयर योर लिंक्डइन। Sure. Just a minute. तो ये मेरा लिंक्डइन है। अभी मैं आगे भी मेरे प्लान्स है कुछ थोड़े बहुत पढ़ाने के, सो इफ़ यू वांट कोई कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़, छोटी मोटी चीज़ की गाइडेंस चाहिए तो लिंक्डइन पे यू कैन सेंड मी अ मैसेज। इफ आई एम एबल टू गाइड आई बी हैप्पी टू। Kanish, I've sent my LinkedIn ID in the